The first paper that we are starting with is November 21, paper 1-2, paper 1 variant 2. ठीक है, इसमें से कुछ specific questions देखेंगे. ये paper 1 है, October, November. You know the instructions already. We've discussed them before. जैसे आपने working पूरी show करनी है और अपनी working के सारे steps के अंदर you're going to be using at least 4 significant figures. ठीक है, keep that in mind. Okay. Now the first question is relatively straightforward. We're going to skip that. We're going to start with the second question. इसका एक part जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा different है. So we'll have a look at both parts because of that. So there's a graph of y equals f of x that is transformed to the graph of y equals f of 2x minus 3. Okay. Now we have to describe fully the two single transformations that have been combined to give the resulting transformation. Now it's fairly straightforward. एक आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन f of x के बाहर हो रही है -3, राइट? सो दैट्स वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन. उसको हम क्या कहेंगे? माइनस हो रहा है -3, दैट्स वर्टिकल ट्रांसलेशन. एक ये है, यहाँ पे वो लग जाते हैं. सो देयर इज अ वर्टिकल ट्रांसलेशन गोइंग ऑन. ये ट्रांसलेशन का वर्ड आपने जरूर लिखना है. डू नॉट राइट दैट द ग्राफ इज मूव्ड और शिफ्टेड. यूज ट्रांसलेशन. ट्रांसफॉर्मेशन वाली लैंग्वेज आपने प्रॉपर यूज करनी है. ये ट्रांसलेशन कहते हैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन की लैंग्वेज में. सो ट्रांसलेशन कहते हैं तो आपने ट्रांसलेशन ही लिखना है. डू नॉट राइट शिफ्ट. ओके, सो इट्स वर्टिकल ट्रांसलेशन 3 यूनिट्स डाउनवर्ड्स. ये लिख सकते हैं. और अ बेटर वे टू राइट दिस इज इन अ कॉलम वेक्टर, ट्रांसलेशन वेक्टर. आपका क्या होएगा? 0 -3. एक ये ट्रांसफॉर्मेशन है जो यहाँ पे हो रही है. The second thing that's happening is this 2 times x. फंक्शन के अंदर x 2 से मल्टीप्लाई हो गया. सो फंक्शन के अंदर जो भी कुछ होता है, यानी x के साथ जो कुछ होता है वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन होती है. अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है. मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है स्ट्रेच. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी फिगर आउट फ्रॉम देयर इज दिस इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच. नाउ स्ट्रेच के अंदर यू हैव टू राइट डाउन द स्केल फैक्टर. हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर थिंग्स वर्क काउंटर इंट्यूटिव. 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्केल फैक्टर जो होता है उसका उल्टा होता है. आप कहेंगे इट्स हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच विद स्केल फैक्टर 1/2. ठीक है, विद स्केल फैक्टर 1/2. ये आपकी 2 ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पर हो रही है. ठीक है. Walaikum assalam, Mustafa, Hashim, and Genius. So this is your part A for question number 2. Let's move on to the next part. Next part में वो क्या कहता है? There's a point P which has coordinates 5, 6 that lies on the transformed curve y equals f of 2x minus 3. State the coordinates of the corresponding point on the original curve. ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वाला पॉइंट आपको गिवन है. आपको ओरिजिनल पॉइंट फाइंड करना है, राइट? नाउ there may be multiple ways of thinking about this. One quick way would be जो ऊपर हमने ट्रांसफॉर्मेशंस की हैं इनको रिवर्स कर दें. इनका रिवर्स क्या होगा? पॉइंट आपके पास क्या है यहाँ पे? द पॉइंट इज 5 and 6. ठीक है, पॉइंट इज 5 and 6. Now, what transformation was happening there? Vertically, it was 3 units downwards, right? So basically, आपके पास जो भी original point था, let's call that original point x and y. एक ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुई? आपने 3 units downwards कर दिया वहां पे जाते हुए. 3 units downwards. अब जब वापस आएंगे तो क्या करेंगे? उल्टा जब करना है हम कहेंगे 3 units आप 3 units ऊपर चले जाएं. यानी कि y कोऑर्डिनेट में क्या होएगा? इसमें हमारा 3 ऐड हो जाएगा, राइट? हमने वापस आना है तो y कोऑर्डिनेट में से 3 ऐड कर दें. दिस बिकम्स 6 + 3 दैट इज 9. y कोऑर्डिनेट ये आ गया. और कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी ऊपर? दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच विद स्केल फैक्टर 1/2. अब इसको रिवर्स करना है. स्केल फैक्टर 1/2 था, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्केल फैक्टर 2. तो आप
5 जो आपका x कोऑर्डिनेट है इसको स्ट्रेच कर दें विद स्केल फैक्टर 2 तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, ये कोऑर्डिनेट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, and what you get there is 5 into 2 which gives you 10. So the original point should be 10 and 9. तो जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन ऊपर लिखी है फर्स्ट पार्ट के अंदर, you have just reversed them here. ठीक है, आपने उल्टा कर दिया, आप वापस ओरिजिनल पॉइंट के ऊपर चले गए. Does that make sense to everyone? Any issues with this? इसका सेकंड पार्ट ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी था. You have to be careful. 5 6 को ट्रांसफॉर्म नहीं करना. 5 6 ट्रांसफॉर्म होने के बाद आपका पॉइंट है, आपने वापस ओरिजिनल पॉइंट फाइंड करना है. तो आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने पहले लिखी थी उनको रिवर्स कर दोगे, उनका उल्टा कर दोगे. Is that okay? Is that okay? All right, good. Let's move on. Let's move on to the next one. So that was question number 2 from this paper. Next, 3 is relatively straightforward. 4 is also relatively straightforward. Let's look at this, question number 5. The first, third, and fifth terms of an AP are 2 cos x minus 6 square root of 3 sin x and 10 cos x. ठीक है, ये आपके पास 3 terms है of an AP. So it's an arithmetic progression. We've got the first term, third term, and fifth term. Okay, now what are they? They are 2 cos x minus 6 square root of 3 sin x, and we've got 10 cos x. ये 3 terms हैं. अब देखें, उसने कहा है find the exact value of x given that x is between pi over 2 and pi. इनके दरम्यान में x. ठीक है. अच्छा. Now it's an AP. AP में क्या होता है? Difference between terms is constant. Okay, but these are not consecutive terms जो उसने दी हुई हैं. ये 2 terms का difference आ रहा है. अब देखें, let's think about this. AP में आपके पास मैं कुछ एक sequence लिखता हूँ. Let's say I have something like this: 3, 5, 7, 9, 11. Consecutive terms में difference constant है. 2, 2, 2, 2. Right? सारे differences constant है. लेकिन अगर मैं ये देख लेता हूँ, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ टर्म्स, इनका डिफरेंस भी तो कांस्टेंट ही होगा. ये भी 4 का डिफरेंस है, ये भी 4 का डिफरेंस है. तो जब इक्वल गैप्स है, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल आ रही है दरमियान में, तो इनके डिफरेंसेस इक्वल होंगे. और दैट मींस इस थर्ड और फर्स्ट का डिफरेंस और फिफ्थ और थर्ड का डिफरेंस एक होंगे. तो इससे आप डायरेक्टली एक इक्वेशन बना सकते हो. क्या इक्वेशन बनाओगे? यू कैन से थर्ड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म. I'm going to write that here like this first. Third में से अगर आप first term minus कर दो, जो ये difference होएगा, that should be the same as the difference between fifth and the third term. Okay? Yeah, so basically 2D. The difference है दोनों के दरमियान में, that is 2 times D. Single term में difference D होता, ये 2D difference है. Essentially, they are both the same. Okay? आपके पास ये equation आ गई कि इन दोनों के डिफरेंसेस को आपने इक्वेट कर दिया. डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फर्स्ट टर्म एंड द डिफरेंस बिटवीन फिफ्थ एंड थर्ड टर्म. इससे आपके पास इक्वेशन आ गई. ना जस्ट हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन. नाउ व्हाट इक्वेशन डू वी गेट? minus 6 square root of 3 sin x minus 2 cos x, that equals 10 minus 6 square root of 3 sin x. Now it's a simple trigonometric equation. After this, we can solve this. Let's quickly do it. What do we get? We have minus 6 square root of 3 sin x. Let's take the sine term from the other side here as well. Are you missing something? मैंने वो 10 के साथ cos x मस कर दिया. Write that here. It was 10 cos x. Okay. Sine वाली term को अगर हम यहाँ पे ले आए, it becomes, or let me just write it like this first. You've got 10 cos x plus 6 square root of 3 sin x. अब sin x को एक साइड पे ले जाएं, cos x को एक साइड पे ले जाएं, and see what that gives you. So if I were to take sin x to the left side, I get minus 6 square root of 3 sin x minus 6 square root of 3 sin x, and on the other side I've got 12 cos x. ठीक है, so this becomes minus 12 square root of 3 sin x equals 12 cos x.
Now what I can do is I can divide cos x to this side. What that gives me is I get sin x over cos x, और इस 12 को जाके 12 स्क्वायर रूट ऑफ 3 को मैं दूसरी साइड पे डिवाइड कर देता हूँ. I get 12 over minus 12 square root of 3, and that is tan x equals minus 1 over square root of 3. Now it's a trigonometric equation. इसमें हम basic angle find करेंगे और इस range के अंदर values लिखते हैं. Okay, let's find the basic angle. Basic angle यहाँ पे क्या आता है? Can somebody tell this to me quickly? So we say tan alpha equals 1 over square root of 3. 1 over square root of 3 किस पे होता है? We are talking about radians here. Angle आपको देखें radians में लिखा हुआ है. तो radians में आपका basic angle क्या आएगा इस पे? Tan inverse of 1 divided by square root of 3. This should be pi over 6. ठीक है, बेसिक एंगल जो आपके पास आ गया यहाँ पे, दैट इज पाई ओवर 6. अब tan जो है वो नेगेटिव है. tan नेगेटिव कहाँ पर हो सकता है? tan नेगेटिव ASTC, tan is negative in the second quadrant or in the fourth quadrant. रेंज क्या दी हुई है? रेंज दी हुई है पाई ओवर 2 से लेकर पाई तक से. पाई ओवर 2 is basically right here, पाई is here. रेंज ही आपकी सिर्फ ये वाला क्वाड्रेंट है, तो नीचे वाला तो पॉसिबल नहीं है. पर हम सिर्फ इस क्वाड्रेंट के अंदर देख लेंगे. दिस इज पाई ओवर 6 एंड दैट्स गोइंग टू गिव अस एन एंगल. ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी. यू कैन सी व्हाट दैट इज pi minus pi over 6 and that gives you 5 pi over 6. That's the value of x that we were looking for. ये आपने सॉल्व करना था इसको. Let's move on to the next part. Now in the next part it says hence find the exact sum of the first 25 terms of the progression. अब आपके पास x की वैल्यू तो आ गई है, so you know these terms exactly कि ये terms क्या क्या हैं. Let's write them down here. 2 cos x, that's the first term. Then you have minus 6 square root of 3 sin x, and then you have 10 cos x. ये आपकी first, third और fifth terms हैं. Keep that in mind. You got first, third and fifth terms. ठीक है, इनमें वैल्यूज इनपुट कर दें. सम के फॉर्मूला में आपके पास क्या होता है? सम ऑफ एन एपी. व्हाट्स द फॉर्मूला? द फॉर्मूला लुक्स लाइक दिस. Sn equals n over 2 into 2a plus n minus 1 into the difference. अगर लास्ट टर्म नहीं पता हो तो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी यूज. a चाहिए आपको फर्स्ट टर्म, वो तो ये है, और डिफरेंस चाहिए. ये दोनों चीजें हमें फाइंड करनी है इस फॉर्मूला के अंदर इनपुट करने के लिए. सो व्हाट्स द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म इज 2 cos x. उसके अंदर इनपुट करने. सो a is 2 cos of x. x की वैल्यू हमारे पास है अब, that is 5 pi over 6. You'll just evaluate it from your calculator. Make sure that you evaluate it in exact form. इसको decimals में नहीं लिखना. If you do not have a calculator that gives you an exact form, get one. आपको याद करने की जरूरत नहीं है. वैल्यूज कैलकुलेटर से डायरेक्टली करेंगे और स्क्वायर रूट फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है, सो ये देखें आपको कैलकुलेटर से क्या आता है. 2 cos 5 pi over 6. This is minus square root of 3. Okay, so this turns out to be minus square root of 3. Okay, अब इसमें बेहतर ये होता है कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप इस तरह लिख दें, क्योंकि उसने जब एग्जैक्ट मांगा होता है वो वर्किंग आपसे रिक्वायर करता है. फिर भी तो यू कैन से this is 2 into minus square root of 3 over 2, and then you say this is minus square root of 3. ठीक है, that's your first term. फिर आपको डिफरेंस चाहिए. डिफरेंस कैसे आ सकता है? आप थर्ड टर्म निकाल लें. थर्ड टर्म क्या आती है? लेट्स फिगर दैट आउट. T3, that's minus 6 square root of 3 into sine of 5 pi over 6. What does this turn out to be? Minus 6 square root of 3 multiplied by sine 5 pi over 6. क्या होता है? 1 over 2. So this gives us minus 3 square root of 3. ये आपके पास थर्ड टर्म आ गई. ठीक है, अब थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म को अगर माइनस करेंगे आपके पास 2 times द डिफरेंस आएगा. ठीक है, या फिर आप टर्म फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं वो कर लें. यू नो दैट
T3 is going to be A plus 3 minus 1 times the difference, right? Term formula में values input कर दें. T3 की value क्या है? T3 is minus 3 square root of 3. A is minus square root of 3 plus 2 times D. यहाँ से आपके पास D की value आ जाएगी. You can figure out what that turns out to be. I think this is minus 2 square root of 3. So now you've got D and you've got the value of A. ये दोनों जाके sum formula में input कर दें. We'll get you a sum. ठीक है? So that's what we're going to do here now. Sum formula में values input कर दें. आपको sum of the first 25 terms चाहिए. N की जगह 25 डाल दें. S25 that equals 25 over 2 into 2 times A. A is minus square root of 3 plus N minus 1. That's 25 minus 1. So it becomes 24 times the difference. The difference is minus 2 square root of 3. Decimals में नहीं convert कर सकते. इसको square root form में लिखना है. अंदर वाला पूरा बेसिक कैलकुलेटर से evaluate कर लें. 2 square root of 3 minus 48 square root of 3. I'm getting minus 50 square root of 3 inside. And then you simplify that and see what you get. 25 into the answer. No, 25 into 50 divided by 2. That gives me minus 625 square root of 3. That should be sum of those 25 terms. Does that make sense for everyone? Any problems with this? Can somebody confirm this as well? Calculation एक दफा confirm कर लेते हैं. Is the calculation fine? इसमें कहीं पे मसला तो नहीं लग रहा? 1082.53. What's that? Exact form चाहिए ना. इसको हम decimals में तो नहीं कर सकते. लेकिन एक दफा ये answer check कर लें. I'm just checking. इसमें कोई मुझे error लग रहा है. So there's some calculation error somewhere. Can somebody point that out where that could be? A is fine. D की value of D is minus square root of 3. So what's wrong there? 2D. Yeah, so 2 से वो divide नहीं किया वहाँ पे. So that should have been 2D actually. Yeah, thank you for that. So this was actually 2D. यहाँ पे फिर हमारे पास D आता है minus square root of 3. So that should have been minus square root of 3. So we need to correct that. This is minus square root of 3. And this should have been minus 2, minus 24. That's minus 26. 26 into 25 divided by 2, that turns out to be 325. So that's what it actually shows. Yeah. So thank you for that. हमने D की value में 2 से divide करना यहाँ पे भूल गए थे. So this should have been minus square root of 3. So S25, sum of the 25 terms actually turns out to be minus 325 square root of 2. Square root of 3. That's our final result. Okay. All right. अब इसको exact form में रहने देना, decimals में नहीं convert करना. That's very important. Otherwise आपके फजूल में 1 mark कट जाएगा वहाँ पे. So leave it in exact form. All right. Let's move on. अच्छा, question number 6 is relatively straightforward. आप 2 equations बना देंगे और उससे हो जाएगा. Let's move on. Question number 7. Okay. Let's try this. In the diagram, the lengths of AB and AC are both 15 centimeters. AB and AC, they are both 15 centimeters. This length AB and this length AC, they are both 15. Okay? The point P is the foot of the perpendicular from C to AB. Foot of the perpendicular क्या मतलब है? C point से एक line आ रही है AB की तरफ, such that it makes a perpendicular at P. P के ऊपर perpendicular बन रहा है. ठीक है? अच्छा,
The length of CP is given diagram में नजर आ रहा है. An arc of a circle with center B passes through C and meets AB at Q. Okay. Center B, it passes through C and meets AB at Q. तो ये basically एक arc है आपके पास. This one, CQ arc है. BC या BQ इसका radius है. ठीक है, that's the information that we're given. We first have to show that the angle ABC is 1.25 radians. Angle ABC find करना है. What's the angle ABC? ABC, we're looking for this angle here. ये angle चाहिए. ठीक है. Now, how do you figure this angle out? आपके पास क्या क्या information है? You know that this length is 15, this length is 15, and this length is 9, और वो एक आपके पास वहां पर angle आ रहा है. ठीक है. Now, how do you figure this angle out? आपको एक side पता है. This side is 9 centimeters. अगर आप ये छोटी वाली triangle देख लो, अगर आप ये छोटी वाली triangle देखो, where is that? This triangle, BPC. इस triangle के अंदर आपको एक length पता है 9, and it's a right angle triangle. Can we find another length somehow? ये 15 है, वो 9 है. Yeah, so we can actually find AP. That's actually going to be quicker. हम ये length find कर सकते हैं AP अगर हम ये वाली triangle देखें. So let me write that down. Triangle APC अगर आप देखें, हमें AC पता है, that's the hypotenuse, और हमें PC पता है, हम AP find कर सकते हैं. ठीक है. So let me write that down. AP का square plus PC का square should be equal to AC square. That's Pythagoras. ठीक है. इस वाली right angle triangle के अंदर हमने Pythagoras अप्लाई कर दिया. इससे क्या फायदा होगा? हमें AP मिल जाएगा. AP square plus 9 square equals 15 square. What does AP turn out to be here? 15 square minus 9 square is the square root. 15 square minus 9 square and then square root of that, that's 12. AP की value 12 आ गई. If AP is 12, what about PB? PB हमारे पास हो जाएगा 15 minus 12 and that is 3. So अब हमारे पास ये length आ गई है 3, ये 9 है. हम simple trigonometry use कर सकते हैं और ये angle ABC find कर सकते हैं. Let's call this angle theta. तो इस angle के हिसाब से 3 is the base, 9 is the perpendicular. Okay, because we have a right angle triangle. This is a right angle triangle. 3 आपकी base है, 9 perpendicular. Tan लगा देते हैं. Tan theta is equal to perpendicular, which is 9, divided by 3, which is the base. यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी. We know theta is acute, तो आपको बस first coordinate में angle चाहिए, वो आप find कर लें. यहाँ से tan inverse of 3, you can see what that turns out to be. Keeping in mind K, it has to be in radians. So this is 1.249 on my calculator, which when rounded off to 3 significant figures gives us 1.25 radians. ये आपको show करना. ठीक है? That's the first part here. Okay, so let me just show that to you complete. So this is the first part. Let's move on to the next one now. Now we have to calculate the area of the shaded region, which is bounded by the arc CQ and the lines CP and PQ. So अगर आप graph पे देखें, इस diagram पे देखें, you've got this shaded region. Let me erase the previous working. Okay, ये हमारे पास shaded region है. What we can do is, हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि एक हम सेक्टर देख लें पूरा. This is a sector. BCQ, this is a sector. उस सेक्टर में से हम माइनस कर सकते हैं ये वाली triangle, and that should give us the area of this figure, of the shaded part, right? Sector में से BQC sector में से, because we were given कि B पे सेंटर है
इस आर्क का QC का सेंटर, QC आर्क का सेंटर B के ऊपर है, सो दिस वी हैव अ सेक्टर हियर, उसका एरिया फाइंड कर लें, उसमें से छोटी वाली ट्रायंगल माइनस कर दें, ठीक है। सो लेट मी राइट दैट डाउन, शेडेड एरिया is equal to area of the sector BCQ minus area of the triangle BPC, ठीक है, triangle BPC उसमें से माइनस कर दें. Now what's the formula for area of a sector? That's half r square theta. What's the radius here? Radius हमारे पास यहाँ पे क्या है? Radius हमें अभी इस पॉइंट के ऊपर नहीं पता, but can we find that? We can find that. हमें या BC फाइंड करना है या फिर BQ फाइंड करना है. We can find BC because we know it's a right angle triangle here. BC की लेंथ हम निकाल सकते हैं using Pythagoras again. How do we do that? Let me just do that here. BC hypotenuse है इस triangle का. So BC square is equal to 3 square plus 9 square, and that's going to give you a value for BC. उसने exact मांगा है कि decimals में. Yeah, so we're not required to give it an exact form. इसको decimals में लिख सकते हैं if you want. 3 square plus 9 square, square root of that is square root of 90. I'm just going to leave it right like this right now. ये आपके पास BC की लेंथ आ गई. This is the arc. This is the radius of this sector. Sector के radius से आगे, ठीक है. Sector के area का formula क्या होता है? Half r square theta. हमें पता है radius of that is square root of 90. उसको square कर दिया, ठीक है. ये square root of 90 आपका BC radius था, उसको square किया. Angle, this is the angle theta. We found that in the first part. इसकी exact value, इसकी ज़्यादा accurate value use करनी चाहिए आपको. 1.245249. That's going to be better for your final result. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1.249. That's the area of the sector. Minus area of the triangle BPC. Triangle BPC, that's just a right angle triangle. आपको base भी पता है, height भी पता है. आप सिर्फ half into base into height वाला formula use कर सकते हो यहाँ पे directly. Half into 3 into 9. And that's going to give us the formula of the area of the triangle. Half into 3 into 9. उससे कोई value आ जाएगी आपके पास 27/2. You can just write that here like that. This should be your area. इसको evaluate कर लें, देखें आपके पास क्या आता है. 45 into 1.249 minus 27 divided by 2. This turns out to be 42.71 for me. आप इसको लिख सकते हैं 42.7. You can leave it like that as well, or you can say 42.7. That's the area. Okay. Does that make sense? It was pretty straightforward. Actually, figure से लग रहा था शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा, but it wasn't that difficult really. Okay, that was question number 7 from this paper. Let's move on. Acha, next we've got question number 8 here. The first part is relatively straightforward. You can try that. In fact, I'll just give you a hint for that quickly. Usne kaha, it is given that the expansion of this, in the expansion of this, the coefficient of x square is -15. X square का coefficient निकालेंगे और उसको -15 से equate कर देंगे. Right? So हो सकता है वो quadratic equation बन रही है, इसलिए आपके पास multiple values आएंगी. एक ही अच्छा, let's just write that down. 4 plus 2x into 2 minus ax whole raised to power 5. आपको x square का coefficient चाहिए ना, तो 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x square का कोएफिशिएंट x square मिलेगा. 4 को हमें x square वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2x को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे x वाली टर्म से. तो हमें दो टर्म्स चाहिए दूसरी एक्सपेंशन के अंदर, एक x वाली और एक x square वाली. इसको सिंपली एक्सपैंड कर लें such that you have x and x square terms. ठीक है, बाइनोमियल लगाना पड़ेगा आपको इसके ऊपर. राइट डाउन द बाइनोमियल फॉर्मूला ऑन द साइड हियर. फॉर्मूला शीट में दिया भी होता है. a plus b whole raised to power n, that is equal to a raised to power n plus nc1 a raised to power n minus 1 into b plus nc2 a raised to power n minus 2b square and so on. ठीक है, सेकेंड वाली जो एक्सप्रेशन है उसको एक्सपैंड कर लेते हैं. कहां तक कि हमें x और x square वाली टर्म्स मिल जाए. ओके, नाउ what should it be? a raised to power n.
यहाँ पे a b की वैल्यूज हमारे पास क्या है, a की जगह पे 2 लिखा हुआ है, b की जगह पे -ax लिखा हुआ है इस एक्सपेंशन के अंदर, और n की जगह पे क्या है, we've got 5. a raised to power n करना है, so that's 2 raised to power 5 plus 5c1 into 2 raised to power 4 into -ax whole raised to power 1 plus 5c2 into 2 raised to power 3 into -ax whole raised to power 2 and so on. आपको x स्क्वायर वाली टर्म मिल गई, you can just stop at this point. ठीक है, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई कर देना है इस वाली टर्म से और 2x को मल्टीप्लाई कर देना है इस वाली टर्म से. लेकिन बिफोर वी डू दैट, लेट्स एक्चुअली सिंप्लीफाई दिस अ बिट. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 4 + 2x into 32 plus 5 into 16, that should be 80, और वो नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन. 5 into 16 here, yes, 5 into 16, that's 80 ax आ गया. 5c2 I think is 10. Let me just check. 5c2 is 10 times 8, then again that is 80. अब ये माइनस यहाँ पे स्क्वायर के अंदर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर. ठीक है. Now what's the coefficient of x square now? x square वाली टर्म हमारे पास कौन से आएगी, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, 2x को मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ. So what do we get? We don't have to evaluate the whole product, सिर्फ ये मल्टीप्लाई कर लें. 4 into 80x square plus 2x into -80ax. साइन का ध्यान रखना, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है. Okay. Now what do we get from this? We get 320x square minus 160 a. So we missed something here again. Sorry about that. यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए था a square x square. a square x square होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि हमने जब इसको स्क्वायर किया इसके अंदर a भी तो था एक. We missed that a there. This should have been a square x square. So this also becomes a square x square. Okay, so this should have been a square x square here. Minus 160a x square. अब x square का कोएफिशिएंट क्या आ गया हमारे पास, 320a square minus 160a, that's the coefficient of x square. Now what should this be equal to? ये आपके पास इक्वल होना चाहिए, उसने कहा है -15 के, तो इसको आप -15 से इक्वेट कर दोगे. ठीक है. So what do you get from that? You get 320a square minus 160a equals -15. This is a quadratic equation. ये आप quadratic equation solve कर लेंगे, आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी. Make sure that you show the working for this, या इसको factorize करके show कर दें, या इसको quadratic formula में input कर दें. But do show working. आपके पास a की 2 values आ जाएंगी इसके बाद. ठीक है. You can try this. a की 2 values आपके पास end पर आ जाएंगी. इसने कहा possible values of a, वो आपको hint देता है कि एक value नहीं होनी चाहिए, एक से ज्यादा होनी चाहिए. ठीक है. So since it's a quadratic equation that you're getting, you will end up getting 2 values from this. या find कर लेंगे उसके बाद. ठीक है. All right. Let's look at the second part. It is given instead that in the expansion of this expression, the coefficient of x square is k. Acha. Now be careful. The first part is no longer relevant here. पहले वाले पार्ट के अंदर जो इंफॉर्मेशन थी, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर -15, वो पार्ट के अंदर लिखा हुआ था. अब सेकंड पार्ट में उसने कहा इट्स गिवन इंस्टेड, यानी कि फर्स्ट पार्ट इज नॉट रेलेवेंट एनीमोर. नाउ द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज k. Now the coefficient of x square is k and the expression is also different now. पहले हमारे पास वहां पे no expression is exactly the same. अब जो हमारे पास पहले x square का कोएफिशिएंट आया था यहाँ पे, it was this thing here. Now they are saying this is equal to k. Instead of -15, this is equal to k. ठीक है. तो हम क्या करेंगे,
उसको k से इक्वेट कर देंगे. Let me just see that again. 320a square minus 160a. ये x square का कोएफिशिएंट आ रहा था हमारे पास. That should equal k now. ठीक है, एक तो ये हो गया हमारे पास. Now it says it is also given that there is only one value of a which leads to this value of k. अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है यहाँ पे, which is 320a square minus 160a minus k equals 0. Okay, this is a quadratic equation. Now they're saying there is only one value of a which leads to this value of k. So basically, ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, this should only have a single solution. इसका एक solution होना चाहिए सर. इसका सिर्फ एक आंसर होना चाहिए. What does that mean? If it has to have only one answer, it's a quadratic equation. Quadratic equation में one real root कब आता है आपका? When the discriminant is equal to 0. Yes, Fazan, that's correct. Discriminant को आपने यहाँ पे 0 से equate कर देना. Now it's very different from what you usually see. Binomial के साथ it's very rare कि quadratics the question आ जाए. So you have to be able to understand this properly. आपके concepts clear होने चाहिए. Quadratic equation आ गई है हमारे पास. उस quadratic equation का एक solution होना चाहिए सिर्फ. इसका मतलब है यहाँ पे discriminant should be 0. अच्छा, अब यहाँ पे एक और confusion होगी आपको. You've got an A here, you've got an A here. ये दोनों A's different है, right? They're not the same. ये different है. So let me write down. हमारी ये b square minus 4ac में ABC क्या represent कर रहे हैं? A is the coefficient of the quadratic term, which is 320. A की जगह पे हमारे पास 320 है. B की जगह पे हमारे पास क्या है? minus 160. और constant जिसके साथ ये variable नहीं लगा हुआ, constant हमारे पास क्या है यहाँ पे? That is minus k. इसके अंदर इनपुट कर दें सारे वैल्यूज. B is minus 160. Square of that minus 4 into 320 into C, that is minus k, that equals 0. Can you hear me again and also see the screen again? Okay, good. Acha, so we were here. K equals minus 25,600 divided by 1280. And that turns out to be minus 20. K की वैल्यू minus 20 आ गई. अब हमें क्या करना है? अब हमें वैल्यू ऑफ A फाइंड करनी है. अब A कैसे आएगा? We've got this equation. इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें. जब K वहां पे आ गया तो K उधर इनपुट कर दें and just solve that equation and see what you get. तो इसके अंदर इनपुट कर दें 320 A square minus 160 A minus into minus 20. Be careful. Minus k था ना, तो k की वैल्यू minus 20 है. It becomes minus into minus 20. So what you end up getting from this is 320 A square minus 160 times A plus 20 equals 0. If you simplify this, 20 से divide करेंगे तो क्या होएगा? 320 over 20. What does that give us? 16 A square minus 8a plus 1 equals 0. You solve this equation. इसको factorize कर लें. इसको factorize करेंगे तो you should be getting 4a minus 1, I think. Right? ये आता है 16a square minus 8a plus 1. So factorize करेंगे आपके पास ये आ जाएगा. And from there you get a equals 1 over 4. That's the value of a. And this was the value of k. ये आपको दोनों find करने. Okay? So you found the value of a and k from there. All right, that was question number 8. इसका B part थोड़ा सा tricky था. First was pretty standard, but part B में you had to understand that you had to apply the discriminant rule there. Discriminant was equal to 0. All right, let's move on. Next, we've got question number 9 here. The volume of a large circular moon of iron ore of radius r meters is modeled by this equation. Iron ore is added at a constant rate of 1.5 meter cube per second. आपको dV over dt given है. That's the rate of increase of volume, 1.5.
you're given an equation, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपके पास given है 3/2 into r minus 1/2 whole cube minus 1. And what you have to do is you have to find the rate at which the radius of the moon is increasing. So dr/dt आपको figure out करना है when radius is 5.5. ठीक है, when radius is 5.5. इसमें क्या करेंगे, आप dv/dr फाइंड कर लेंगे. ठीक है, ये इसको डिफरेंशिएट कर लें, r की वैल्यू उसमें 5.5 इनपुट कर दें, and then you can use the chain rule. It'll say dr/dt equals dr in the first fraction here, dt at the end, in the middle you'll have dv and dv. ठीक है, इस पे चेन रूल लगा के आप इसको आगे सॉल्व कर लेंगे. r की वैल्यू आपने क्या करनी है, 5.5 इनपुट कर देनी है. ठीक है, the first part is relatively straightforward. I think you can do that. So what we'll do is we will move on to the second part. That is a bit tricky. Second part देखते हैं इसका. Who is that? Daniel? No, you cannot do that. So there's a question कि ये जो last part था हमारे पास, ये जो last part था जिसमें हमें binomial expansion use करनी थी. Can we use the other formula for this? वो जो P3 वाला formula होता है 1 plus x whole raised to power n वाला, can we use that here instead? No, we cannot do that because वो आपके पास approximation होती है. That's not an exact expansion. Paper 3 वाला formula यहाँ पे नहीं use कर सकते. You're not going to do that. ठीक है, आपने यहाँ पे paper 1 वाला ही करना है. A plus b whole raised to power n use करना है, 1 plus x whole raised to power n वाला नहीं करना. Don't do that. Okay, all right. अच्छा, ये question number 9, इसका second part देखते हैं. Find the volume at the instant when the radius is increasing at 0.1 meter per second. Why did I choose this question? Maybe अच्छा ठीक है, volume find करना है. Okay, let's do this. Examiner report में लिखा हुआ था. For some reason, candidate found this difficult, so that's why I chose this. And let's do the second part. I don't know why it's difficult, but let's try this. अच्छा, so V हमारे पास आ रहा है ऊपर. हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है at the instant when the radius is increasing at 0.1. So dr/dt उसने आपको बताया, that is 0.1. That is given. dr/dt उसने आपको बता दिया. अब हम क्या कर सकते हैं, dr/dt हमारे पास है, फर्स्ट पार्ट में हमने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया होगा. dv/dr हमने शायद फाइंड कर लिया पहले ऊपर. या सो dv/dr यहाँ पे इवैल्यूएट कर लेते हैं. ये क्या आता, इट वुड हैव बीन 3/2 एज इट इज. कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैसे ही रहता है जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है. 3 आके मल्टीप्लाई हो गया, पावर नीचे आके मल्टीप्लाई होगी, पावर में से 1 माइनस कर दिया, so r minus 1/2 होल स्क्वायर हो गया. और बाहर पे इसके अंदर वाले पार्ट के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है. r का डेरिवेटिव 1 होता है. ठीक है, तो वो तो 1 ही है एज इट इज, तो उसको मल्टीप्लाई करके कुछ भी नहीं होगा. -1 1 के डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. सो दिस इज द डेरिवेटिव. दिस टर्न्स आउट टू बी 9/2 into r minus 1/2 whole square. So we've got dv/dr from the first part already. ठीक है, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट पार्ट से. इसको नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे. dv/dr that is equal to 9/2 into r minus 1/2 whole squared. ठीक है, ये हमें dv/dr पता है फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट. अब हम क्या करें, और हमें क्या इंफॉर्मेशन दी हुई थी. अच्छा, हमें ये भी पता है कि dv/dt क्या है. सो दैट्स आल्सो 1.5. अच्छा, वो तो वही है, dv/dt तो वही है. लेट्स राइट दैट डाउन हियर एज वेल. dv/dt इज 1.5. ये भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास. हम क्या कर सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके we can find dv/dr, right? How can we do that? We can use the chain rule again. हमारे पास एक dv/dr का एक्सप्रेशन ये आ रहा है. This is from the formula that we had for v in terms of r.
इन दोनों pieces of information को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, we can use the chain rule and find dv over dr from here. इसकी जो exact value है इस point के ऊपर वो क्या होगी, dv over dr that equals dv over dt into dt over dr. चेन रूल यूज कर लिया, राइट? सो dt और dt एक तरह से कैंसिल हो रहे हैं, आपकी चेन बन गई और ये dv over dr याद, राइट? दैट्स द चेन रूल दैट वी हैव हियर. dv over dr क्या आ जाएगा, dv over dt is 1.5 into dt over dr, so basically reciprocal of this, that is 1 over 0.1. What do we get from this? We get 15 from this. 1.5 over 0.1, ये आता है, this is 15. ठीक है, so dv over dr की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ रही है और फॉर्मूला जो हमारे पास दिया हुआ था v in terms of r, उसको डिफरेंशिएट जब हमने किया वहां से हमें क्या मिला, हमें dv over dr ये मिल रहा था. What we can do now is we can find the value of the radius. r की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, अब r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जब आपका dr over dt 0.1 है. हम r की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है? जब r की वैल्यू आ जाएगी उसको वॉल्यूम वाले फॉर्मूला में इनपुट करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा. एग्जैक्टली. सो हाउ डू वी फाइंड दिस नाउ? इन दोनों को इक्वेट कर दें. एक हमारे पास ये dv over dr आ गया, एक हमारे पास ये dv over dr है. दोनों को इक्वेट कर दें एंड सी व्हाट यू गेट फ्रॉम दिस. 9 over 2 into r minus 1 over 2 whole square, that equals 15. Now what does that give us? R minus 1 over 2 whole squared equals 30 over 9. Now rather than expanding this and making it a quadratic, आप दोनों sides को square root ले लें. So that gives you r minus 1 over 2 equals plus minus square root of 30 over 9. ठीक है? Now you either have r minus 1 over 2 equals plus square root of 30 over 9, or you have r minus 1 over 2 equals minus square root of 30 over 9. इससे तो आपके पास कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी मोस्ट लाइकली. लेट मी जस्ट चेक. सेकंड वाले से आपके पास क्या आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 30 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. नो, यू आर गेटिंग अ पॉजिटिव वैल्यू फ्रॉम देयर एज वेल. राइट साइड से हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू आती है. how's that possible? Let me start. Yeah, negative आती है. So I forgot the negative sign there. This is actually minus 1.325 or 326. This is not possible. Radius तो negative नहीं हो सकता, right? R क्या represent कर रहा है? R represents the radius of that circle. ये तो negative नहीं हो सकता. दूसरी R की value क्या आ गई यहाँ से? This is giving us square root of 30 over 9 plus 1 over 2, and that is 2.3257. This is the radius. अब इसको जाके इनपुट कर दें अपने वॉल्यूम फॉर्मूला के अंदर, आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा उस इंस्टेंट के ऊपर. Now what was the volume formula? We had that given in the question. That was 3 over 2 into r minus 1 over 2, 3 over 2 into r minus 1 over 2 whole cube minus 1. This was the volume formula. इसमें input कर दें और value r equals 2.3257 and evaluate the volume. That's what we're looking for. ठीक है, ये evaluate करें, देखें क्या आता है. 3 divided by 2 into 2.3257 minus 0.5 whole cube and then minus 1, and that gives me 8.128. You can leave it like this if you want, or you can convert it to 3 significant figures, and that is 8.13. That's the volume that we're looking for. Okay? Now, it was actually a bit tricky because it was slightly different from the usual questions that you get in rate of change. आपके पास दो values ये given थी, आपने उससे rate of change find कर लिया और फिर formula को use करके आपने dv over dr वहां से भी find कर लिया, उन दोनों को equate कर दिया, वहां से r की value मिली, वापस volume के अंदर input किया, and you got your final result from there. Okay, I hope that makes sense. Let's move on to the next one now. Question number 10 was relatively easier from this paper. 11 is also relatively straightforward. Let's do the last one now.
The tangent to the circle at P meets the x-axis at A and the y-axis at B. Find the area of the triangle OAB, where O is the origin. Okay. O is the origin. OAB का area find करना है. So basically, we're looking for the area of this triangle. OAB. ये area चाहिए. ठीक है? अच्छा. अगर हमें ये coordinates मिल जाए A और B के, तो half into base into height formula use कर सकते हैं. Triangle का area आ जाएगा directly. A और B के coordinates कैसे आएंगे? AB की equation निकाल लें. कैसे निकालेंगे? You can find. You have a point P तो आपको पता है. आपको सिर्फ gradient चाहिए tangent का, फिर उसके आप x और y intercept निकाल लोगे. And it's going to be pretty straightforward after that, right? So first part हम जल्दी से मैं आपको बता हिंट दूंगा. Second part इस पे करते हैं. उसके बाद first part में आपने tangent की equation निकालनी है. ठीक है? इसका आसान सबसे तरीका क्या होएगा? You first find the center of the circle. Circle का center find कर लें पहले. कैसे आएगा? This is the equation of the circle. ये आपको given है. इससे सेंटर फाइंड कर लें. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xx प्लस 4y माइनस 27 इक्वल 0. दैट्स द इक्वेशन दैट वी गिवन. स्टैंडर्ड आपके पास फॉर्म क्या होती है? x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल्स r स्क्वायर. इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. कैसे करेंगे? वी कैन कंप्लीट द स्क्वायर फॉर x and y बोथ ऑफ देम. x स्क्वायर माइनस xx, इसमें क्या ऐड करेंगे? 3 का स्क्वायर ऐड किया और 3 का स्क्वायर माइनस भी कर दिया. Why? Because we've got the coefficient of x as 3, coefficient of x as 6. 6 को डिवाइड किया 2 से, स्क्वायर कर दिया, उसको ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया. Right? So that's what we're doing here for x. We do the same thing for y. y क्या है? y स्क्वायर प्लस 4y. y का कोएफिशिएंट 4 है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे. What are we left with? Minus 27, and that equals 0. ठीक है? Now these three terms are going to give us a perfect square. These three terms are going to give us a perfect square. बाकी आपके पास constant हो जाएगा. So we have x minus 3 whole square minus 9 outside plus y plus 2 whole square minus 4 outside and minus 27 equals 0. And that gives you x minus 3 whole square plus y plus 2 whole square equals 27, 4, and 9. That is 31 and 40. So you got 40 on the other side. इसको compare कर लें standard form के साथ. x minus a whole square plus y minus b whole square. Center क्या आ गया आपके पास circle का? इन numbers को बस flip कर दें. Minus 3 है ये 3 हो जाएगा. Sign flip कर दें. This is plus 2. Flip the sign, becomes minus 2. And the radius is square root of 40. ये आपके पास circle की information आ गई. ठीक है? Now, once you have the center, आप क्या करोगे? Let's call the center something. Let's call the center. अच्छा, O तो है already. इसको C कह देते हैं. What you can do is you can find the gradient of CP. ये आ जाएगा आपके पास. Tangent का gradient क्या होएगा फिर? Gradient of tangent. Tangent और radius एक दूसरे का perpendicular होते हैं फाज़ैन. Yes, these are perpendicular. जब आपके पास CP आ जाएगा तो PA का gradient क्या हो जाएगा? उसका negative reciprocal. जो भी आपके पास value आएगी उसका negative reciprocal कर दें. You'll get the equation. Equation आ गई. आपके पास gradient आ गया tangent का. Tangent में gradient आ गया. You got a point. ये equation find कर लें इस line की. ठीक है? ये equation आ जाएगी. Find the x-intercept for that, y-intercept for that, and apply the formula half into base into height for the triangle's area. ठीक है? इसके बाद आप कर सकते हैं या आप कर लेंगे. Let's look at the second part after this. Now the second part says there are points P and Q. There are points Q and R that lie on a circle, that also lie on the circle, such that PQR is an equilateral triangle. Okay, now what I'm going to do for that is I'm just going to copy this figure. Let me see what I should do. Okay, let me just erase this and then take a picture. Okay, now this is an important part. इसमें हमारा concept भी आएगा that you need to know about. It's going to make your life easier.
Okay, so you got this figure. There are points Q and R that also lie on the circle. You got this point Q, this point R, such that PQR is an equilateral triangle. So this triangle PQR is equilateral. Now, equilateral triangle का क्या मतलब होता है? This angle is 60. This angle is 60. All angles are 60 degrees. ठीक है? We have to find the exact area of this triangle. PQR का हमें area find करना. ठीक है? How do we figure out this area? अब इसके लिए there's a property of circles and equilateral triangles that you're going to find handy. That you're going to find handy here, and it goes like this. अगर आपके पास एक सर्कल है और उसके अंदर कोई इस तरह से इक्विलैटरल ट्रायंगल आ रही है, तो जो सेंटर होगा सर्कल का, that's here, let's say this is point O. इस सेंटर के साथ जो एंगल्स बन रहे होंगे आपके, think about this. This is R, this is Q. ये chord है. This chord is making an angle at the point P that is 60 degrees. What about this angle? This angle is going to be 120 degrees, right? Similarly, if you think of this chord PR, इसको अगर ज्वाइन कर दें यहाँ पे सेंटर के साथ, PR is making 60 degrees at the circumference. तो सेंटर पे क्या बनाएगा वो एंगल? This angle is going to be 120 degrees. And similarly, this last angle is also 120 degrees. And these three triangles that we've got here, they are basically congruent. Just enlarge that. Center पे अगर आप join कर दें, described in a circle like this, तो center पे ये तीनों 120 degrees के angles बनाते हैं. ठीक है? अब इसका फायदा क्या हुआ हमें करने का? इसका फायदा ये हुआ कि PQR की लेंथ तो हमें नहीं पता थी, लेकिन जब सेंटर से ज्वाइन कर दिया, now we know that this is the radius, right? OQ, OR, OP, these are all radii, right? So OP, OQ, OR, इन सब की क्या वैल्यू है? इन सब की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 40 हमने पहले फाइंड किया. ये सारे रेडियस हैं सर्कल के. ठीक है? ये स्क्वायर, ये आपके पास आ गया रेडियस. अब तीनों ट्राइंगल्स के एरिया आप निकाल सकते हो, राइट? सो यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ एनी वन ऑफ दिस ट्राइंगल्स. लेट्स से सेंटर हमारा C था, सो लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PCR. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल. इसका एरिया कैसे आएगा? You've got two sides and the angle between them. Yes, half into AB sin C. Half into one side, that is square root of 40. एक side पे radius है, दूसरी side पे भी radius है, that's also square root of 40. Into sine of the angle, angle is 120 degrees. And you evaluate this, एक triangle के area आ जाएगा. What's that? 20 into sine 20, 20 into sine 120. Make sure that your calculator is in degrees mode for this. अगर आप 120 use करें, otherwise आप 2 pi over 3 use करें. So I'm going to change my angle mode there. That's 20 sine of 120. This turns out to be, अच्छा इसको आप step by step लिखते हैं. 20 into sine 120 की value क्या होती है असली में? That is square root of 3 over 2. And that gives you 10 into square root of 3. ठीक है? This is 10 square root of 3. Area of triangle आ गया, एक triangle का area आ गया. अब equilateral triangle जो पूरी है PQR, उसका एरिया कितना हो जाएगा? इसमें इस तरह की तीन ट्राइंगल्स आ रही है ना, एक ये है, एक ये है और एक ये है. You've got 3 triangles like that. इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा. ओके? एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR, that is 3 into 10 square root of 3, and that is 30 square root of 3. That's the area of this triangle. Okay, that's what we were looking for. So ये property जो है, it's going to be useful. Make sure that you know this. Center के साथ अगर join कर दें कोई equilateral triangle हो इस तरह की, तो angles बनते हैं 120 degrees के angles बनते हैं. Right? It's coming from angle at center
being twice the angle of the circumference, तो वहां से आ रहा है, ठीक है? So that completes the important question that we had to do from this paper. दूसरे paper, Fazan, you're right, जो दूसरा variant आपने करना था, paper 1-3, that was much easier than this. उसमें से हम 2-3 questions बस देखेंगे very quickly, and then we move on to mechanics after that. Okay, so that was question number 12, and that's it from this paper. All right, let's move on to the next paper now. Next, we've got paper, November 2021, paper 1-3. Okay. Overall, if you look at this paper, this is relatively simpler. इसमें कुछ questions and answers जो थोड़े से complicated है. First part, you're going to skip that. First question, second question, it's relatively easy. Let's look at this third one. It's the second part, basically. I want to have a look at that. Let's do this. First of all, we have to express this thing, 5y squared minus 30y plus 50 in this completed square form. Okay, square complete करना है. There are so many different methods for this. You can use any that you like. हम क्या करते हैं? One possibility is we take 5 common from the first two terms. Y square minus 6y आ गया. And you've got plus 50 outside. अब क्या करें? 6 को half किया. That's 3 squared. And minus 3 squared. Plus minus कर दिया दोनों. Now, these three terms are going to give us a perfect square. That's going to be 5 into y minus 3 whole square minus 9 plus 50. 5 को अंदर multiply कर दें, we get 5 into y minus 3 whole square minus 45 plus 50. And that is 5 into y minus 3 whole square plus 5. ये आपने square complete कर दिया. That's what you had to do in the first part. ठीक है? Let's look at the second part. अच्छा, बस second part में क्या कहता है? The function f is defined by f of x equals x raised to power 5 minus 10x cubed plus 50x. Determine whether f is an increasing function, a decreasing function, or neither. अच्छा, increasing function, decreasing function क्या होते हैं? Increasing function वो होता है जिसका derivative positive है, जिसका gradient positive है. Decreasing function is in which the gradient is negative. Neither का मतलब है वो positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है. We don't know. कभी positive होगा, कभी negative होगा, उसका हमें नहीं पता. ठीक है? So what do we do for this? इसको differentiate करेंगे function को, because gradient कैसे हमारे पास आता है function से? Differentiate करके, right? So you've got f of x, f of x को differentiate कर लें, और फिर उस derivative को देखें क्या वो positive है या negative है या क्या है. You have to figure it out from the derivative. Okay. F dash of x, what's that? 5x raised to power 5 the derivative, that is 5x raised to power 4 minus 10x cubed, that's 10 into 3, 30x square plus 50. That's what we end up getting in this part. That's f dash of x. ठीक है? अब क्या करें इसको? You see, there is some similarity between what we've done here and what's given in the first part. The coefficients are the same, है ना? But the powers are different. लेकिन वो बस powers क्या हुई हैं? 2 से multiply हो गई. Ratio वही है 2:1. So if we were to do a substitution here, हम कह सकते हैं y की जगह पे क्या आ गया है? Y की जगह पे हमारे पास basically x square आ गया है. And if you compare the two forms, if you compare this and this, y has been replaced with x square. तो आपने first part में जो square complete किया है, यहाँ पे आप basically इस चीज को, इस derivative को directly ऐसे लिख सकते हो. You can say that's the same thing as 5 into x square minus 3 the whole square plus 5. Does that make sense? ये जो completed square form ऊपर हमने निकाली थी, उसमें y की जगह पे हमने क्या किया? x square डाल दिया. So basically ये जो ऊपर expression है, इसको हम इस form में लिख सकते हैं जो हमने ये लिखा. And now it's easy to figure out whether this expression is going to be positive, negative, or neither of them, right? अब यहाँ से हम figure out कर सकते हैं. कैसे figure out करेंगे? आप देखें. You have to give reasoning for this, right? आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं this is always positive
Why? This is always positive. Why? Because this is 5 into a square number. Square तो negative नहीं हो सकता. Square negative नहीं हो सकता. So this term is always positive. This is plus 5. This is of course positive. Right? तो ये दोनों positive हैं. इसका मतलब ये हुआ your f dash of x, your derivative is greater than 0. अगर greater than 0 है, यानी कि gradient जो है, that is positive. इसका मतलब होता है you've got an increasing function. Okay, does that reasoning make sense? जब आपने square form में convert कर दिया, अब square तो हमेशा positive होएगा. So this first term is always positive. Because of that reason, तो आपने लिखना है कि क्योंकि ये square है और बाहर एक positive number से multiply हो रहा है, it has to be positive. And then if you add 5 to that, that is still positive. So everything is positive. Your overall gradient here is positive. That's why you say it's an increasing function. ठीक है? All right. Let's move on to the next one. Question number 4 is relatively easier. Yeah, try कर लेंगे. 5 is also doable. ये भी हो जाएगा 6. Let's have a look at this one. Okay, question number 6 from this paper. Now the diagram shows a graph of y equals f of x. अच्छा, इसका जो first part है, that is a bit tricky because आपको कोई points नहीं पता. Points के बगैर आपने इसको sketch करना. Okay. Now the diagram shows the graph of y equals f of x. On this diagram, sketch the graph of y equals f inverse of x. तो आपने f inverse का graph बनाना. Now, what's the relationship between the graph of a function and its inverse? Relationship क्या होता है इनमें? They are reflections of each other in the line y equals x. जब भी आपने एक function और उसके inverse का graph बनाना है, आपने क्या करना है? Y equals x line जरूर draw करनी है. So that's how we start. हमें तो पता भी नहीं है फंक्शन है क्या, इसकी मतलब इसकी इक्वेशन क्या है. We just have f of x. हम क्या करेंगे? हम एक लाइन यहाँ पे बना देंगे y equals f of x, और फिर इस लाइन में इस ग्राफ को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, इसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे. नाउ हाउ डज दैट हैपन? टेक वन पॉइंट एट अ टाइम. एक पॉइंट अगर ये देखते हैं, लेट्स से ये पॉइंट आपका किधर चला जाएगा? आपने परपेंडिकुलर देखना है, इसके रिफ्लेक्ट करना है ना, जितना डिस्टेंस ये है. आप स्केल रखेंगे, और आप क्या करेंगे? आप इसको यहाँ पे इस तरह उतने डिस्टेंस पे आगे ले जाएं. ठीक है, दैट्स वन आइडिया. और व्हाट यू कैन डू इंस्टेड इज आप इसको रफली मार्क कर लें. दैट माइट बी इजियर. आपको शायद वो स्केल से करने में टाइम लग जाए. आप इसको रफली ना कुछ मार्क कर लें, डिस्टेंसेस देख लें. यहाँ पे तो उसने स्केल कुछ नहीं दिया हुआ, तो आप कुछ अज्यूम कर लें. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज -3, तो ये हो जाएगा -2, -1. और उसी स्केल के ऊपर अगर आप वर्टिकली देखें हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड पे कम है, इसकी हाइट ज्यादा है रिलेटिवली. तो आप ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे -3 है तो ये ऊपर -4 होएगा, अब ऊपर +4 होएगा. इसी तरह नीचे ये -4 आ गया. तो ये पॉइंट आपके पास क्या है? दिस इज -3 and 4. इसको रिवर्स कर देंगे तो आपके पास इनवर्स का पॉइंट आ जाएगा. दैट विल बी 4 and -3. तो एक पॉइंट आपके पास इधर आ गया, वो रिफ्लेक्ट हो गए. दैट विल बी समवेयर हियर. ठीक है, तो ये वाला ऊपर वाला पॉइंट था, ये रिफ्लेक्ट होके इधर आ जाएगा. दैट विल बी लेट्स से 4 and -3. इसी तरह से आप बाकी कुछ पॉइंट्स देख लें. जैसे ये पॉइंट देख लें, इसको रिफ्लेक्ट करेंगे. अगेन यू कैन यूज द कोऑर्डिनेट्स इफ यू वांट, और यू कैन जस्ट पुट अ स्केल देयर और देखेंगे जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस नीचे लगा दें, तो वो पॉइंट यहाँ पर आ गया. ठीक है, अभी नीचे वाला पॉइंट रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगा? ये रिफ्लेक्ट होके इधर आ जाएगा. तो रफली जो आपकी फिगर बन जाएगी, ये ओरिजिन वाला पॉइंट ओरिजिन पे रहेगा. ठीक है, सो roughly what you're going to get eventually is something like this. इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें. हमने मार्क किया, इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारी फिगर कैसे लगेगी? इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस.
यहाँ से इधर आ गया और ये यहाँ से इस तरह आ गया. So this is roughly what the graph looks like. ठीक है? Don't spend a lot of time on this. It's a 1 mark question. Maybe if you are confused about something like this, 1 mark है. Leave it until the end. End पे जब time हो तब करें इसको. ठीक है? Because it's otherwise it's unnecessarily going to take a lot of time और उसकी इतने ज़्यादा words नहीं है. ठीक है? So that's how you think about this. Let's look at the second part. Now this is important. इसका standard method है हमारे पास, but this is slightly tricky क्योंकि इसमें अक्सर लोग algebraic errors बहुत ज़्यादा कर देते हैं, plus minus के errors होते हैं, multiplication division सही नहीं करते. So it's really important that you are careful about that. Inverse find करना है. So it's given that f of x equals minus x over square root of 4 minus x square, where x is between minus 2 and 2. We have to find an expression for f inverse of x. Inverse find करना है. Inverse के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले we replace f of x with y. ठीक है? हमारे पास क्या आ गया? y equals minus x over square root of 4 minus x square. And now what we want to do is we want to make x the subject. x को subject बनाना है. अब x को subject बनाने के लिए हमें पहले तो एक square root remove करना पड़ेगा. ठीक है? So what you can do is we can square both sides. ठीक है? And see what we get from that. दोनों sides को square कर दें. इससे क्या होता है? Y square equals x square over 4 minus x square. ठीक है? Cross multiply. इसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ. और is that going to be helpful? No. अच्छा, उसको बस उधर में जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं. 4y square minus x square y square that equals x square. x वाली टर्म्स एक साइड पे ले जाएं. So we have x square plus x square y square, and we have 4y square here. X common liya, x square common liya. We have 1 plus y square inside, and we got 4y square here. X square equals 4y square over 1 plus y square. आपने x को subject बना लिया. ठीक है? But it's not x the subject yet. x square आपने subject बनाया. अब इसका square root ले लें. But remember, whenever we take square root, we put plus minus there. So we have x equals plus minus square root of this whole thing, 4y over 1 plus y square. And that is x equals plus minus square root of, or you can say, equal to 4y square tha, that becomes 2y. Denominator mein aa gaya 1 plus y square. Now what we've got to do is we've got to figure out कि यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे. ठीक है? यहाँ पे हम प्लस यूज करेंगे या फिर माइनस यूज करेंगे. Now which one of the two do we choose here? प्लस यूज करें या माइनस यूज करें? How do you figure that out? X is between minus 2 and 2. तो x की वैल्यूज हमारे पास -2 और 2 के दरमियान में होनी चाहिए. That's going to look like that. इसमें तो नेगेटिव पे भी जा रहा है और पॉजिटिव भी आ रहा है. ये एक्चुअली दोनों हो सकते हैं. Yes, that's what I'm thinking. It can actually be both. It can be both plus and minus क्योंकि डोमेन आपकी -2 से 2 तक है. Let's write down the inverse. Maybe that might give us a hint. इसका inverse क्या आएगा? F inverse of x equals plus minus 2x over square root of 1 plus x square. That's what the inverse turns out to be. Okay. So basically the issue is जो original function है ना, वो आपके पास यहाँ पे उसमें negative लगा हुआ है. Original function के अंदर we've got this minus with the square root. आप ग्राफ पे भी देखें क्योंकि वो उसी फंक्शन की बात हो रही है. अगर आप ग्राफ पे देखें तो जो इनवर्स की वैल्यूज हैं उसकी जो रिजल्ट आता है या x की वैल्यू जब यहाँ पे नेगेटिव इनपुट करो, आप ग्राफ पे देखें नेगेटिव वैल्यू के ऊपर y की वैल्यू इनवर्स की भी पॉजिटिव होनी चाहिए. इनवर्स की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए. तो नेगेटिव इनपुट करने पे पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x इनपुट करने पे नेगेटिव वैल्यू ऑफ y आनी चाहिए. सो बेसिकली
दैट इज ओनली पॉसिबल इफ यू गॉट द नेगेटिव साइन देयर, ताकि वो x के साइन को रिवर्स कर दे वहां पे. एंड व्हाई इज इट हैपनिंग? इट्स बेसिकली हैपनिंग बिकॉज जो ओरिजिनल फंक्शन है ना, उसमें भी स्क्वायर रूट है, उसमें भी स्क्वायर रूट है. जनरली ये नहीं होता ओरिजिनल फंक्शन में, यहाँ पे स्क्वायर रूट है. स्क्वायर रूट के बाहर नेगेटिव साइन लगा हुआ है सर. ओरिजिनल फंक्शन के अंदर सिर्फ नेगेटिव स्क्वायर रूट कंसिडर किया हुआ है उसने. इनवर्स लेने के प्रोसेस में हमने उसको स्क्वायर किया था. इवेंचुअली एट द एंड व्हेन वी टेक द स्क्वायर रूट अगेन, स्क्वायर रूट पे हम सिर्फ नेगेटिव पार्ट कंसिडर करेंगे सो दैट इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू दैट ओरिजिनल फंक्शन देयर. एंड यू कैन सी दैट इन द ग्राफ एज वेल. ग्राफ पे आप देखें, x की वैल्यू जब नेगेटिव इनपुट करते हैं y पॉजिटिव आते हैं, x की वैल्यू जब पॉजिटिव इनपुट करते हैं y नेगेटिव आते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव होएगा, वो तो नेगेटिव नहीं हो सकता. न्यूमरेटर पे सिर्फ डिपेंड करता है. x की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी उसको हमें पॉजिटिव करना है, यानी कि उसका साइन चेंज करना है. सो वी शुड हैव अ नेगेटिव आउटसाइड फॉर दैट. अगर x की वैल्यू पॉजिटिव इनपुट करें तो उसको भी साइन चेंज करना है, तो उसके लिए नेगेटिव होना चाहिए. सो दैट्स व्हाई वी पुट द नेगेटिव साइन देयर. नाउ दैट मेक्स सेंस. नाउ इट वाज प्रीटी ट्रिकी, इट वाज क्वाइट ट्रिकी, बट it makes sense now. It should be negative there, but for that you have to use the graph as and understand why it's coming from the graph, and also understand के original function में क्योंकि उसने square root में negative वाला part consider किया हुआ है, तो हम यहाँ पे भी वो negative part consider करेंगे. That's the last part here. Let's move on to the next thing. अच्छा, now again this is going to be a bit tricky. यहाँ पे composite function की domain range की बात हो रही है. This is again something that's been recently added to the syllabus. So इसके आपको बहुत सारे questions नहीं मिलते past papers के अंदर. Let's have a look at this. The function g is defined by g of x equals to g of x equals to x for x between minus a and a. So there's another function now, g of x, and that's equal to x. For x between minus a and a, where a is a constant, state the maximum possible value of a for which fg can be formed. That's a 1-mark question, but again, it requires some thinking. Fg function, how is that going to look like? F of g of x. So basically, इसमें स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है? x आपके इनपुट जा रही है g के अंदर, g फंक्शन के अंदर, वो आपको एक आउटपुट दे रहा है, दैट इज g of x. अब फिर वो g of x जो है वो इनपुट जा रही है फंक्शन f के अंदर, और वो आपका आउटपुट दे रहा है f g of x. Right? That's the step by step process that's happening here. X is going as an input to g, g आपको आउटपुट दे रहा है g of x. g of x आपका इनपुट जा रहा है f के अंदर, f is going to give you an output that is f g of x. अब f की डोमेन में क्या दी हुई है? f की डोमेन उसने क्या दी हुई है? f के अंदर क्या इनपुट कर सकते हैं हम? f के अंदर हम सिर्फ इनपुट कर सकते हैं x की वैल्यूज बिटवीन -2 and 2, यानी कि देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन हियर. यहाँ पे जाके f की जो वैल्यू इनपुट करनी है यहाँ पे, वो सिर्फ -2 और 2 के दरम्यान में हो सकती है. अब इनपुट करना क्या है? इनपुट हमने करना है g of x. g of x जाके इनपुट करना है वहां पे. इसका मतलब ये हुआ कि g of x जो है that should be between -2 and 2. g of x आपका -2 और 2 के दरम्यान में होना चाहिए. ओके, ये आपकी डोमेन है. x की वैल्यूज, x की वैल्यूज कैसे फाइंड करें उससे? g of x क्या है? g of x is 2x. 2x should be between -2 and 2, and that gives you x between -1 and 1. So x जो है आपके पास -1 और 1 के दरम्यान में होना चाहिए. So you have to work backwards in this case. आपने देखना है कि आपको eventually किस में इनपुट करना है? f के अंदर इनपुट करना है. f क्या इनपुट्स ले सकता है? f can only take inputs for x between -2 and 2, यानी कि जो g की वैल्यू होनी चाहिए वो -2 और 2 के दरम्यान में होनी चाहिए. हमने यहाँ पे लिख लिया. अब g क्या है? g is 2x. That means 2x should be between -2 and 2. So x should be between -1 and 1. So what's the value of a then?
यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, a इक्वल्स 1। a की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी 1 होगी। इससे अगर आप बाहर चले जाओगे तो आपका कॉम्पोजिट फंक्शन नहीं फॉर्म हो सकता। Does that make sense? So we've done a few questions like this in class before, but this is quite tricky. I hope that makes some sense. इसका process हमेशा इसी तरह से होता है. You have to think about what's being input into what function और वो उसके बाद क्या बन जाएगा. Okay? All right, let's move on. Assuming that fg can be formed, find and simplify an expression for fg of x. This is simple now. आपको f of x पता है और आपको g of x पता है, या find कर सकते हैं. ठीक है, -x over square root of 4 minus x square, and g of x is 2x. You want fg of x, तो f के अंदर आपने g of x input करना है. That's f of 2x. That gives you minus 2x over 4 minus 2x का whole square root of that. That is minus 2x. So simplify करने होता है. So you can simplify it as much as it is possible. Minus 2x over 4 minus 4x square का square root. Now you could take 4 common from this. It becomes 4 square root into 1 minus x square का square root. अब ये cancel हो जाएंगे. 2 और 2, ये square root of 4 2 हो जाएगा. ये 2 है, ये cancel हो जाएंगे. Minus x over square root of 1 minus x square. That's the result that you get from this. ठीक है, इसको as it is इस तरह से छोड़ सकते हैं, and that's going to be okay. ठीक है, that's your composite function. All right, let's move on. Question number 7 is relatively straightforward. 8 is also easy here. 9, let's look at this. Okay. 9 के बाद, do we have another one after that? Yeah, so this is the last question that we're going to do from this paper, and then we're done. Okay, let's start with this. The line y equals 2x plus 5, it intersects the circle with the equation x square plus y square equals 20 at a and b. Find the coordinates of a and b in third form, and hence find the exact length of the chord AB. अब इसमें कोई खास वैसे बहुत ज़्यादा complication नहीं है. The only thing is you need exact answers. तो बस आपने working जो है उसका ख्याल रखना है कि वो decimals में नहीं जानी चाहिए, exact answers रखने. ठीक है, so let's do this very quickly. इसका process straightforward है. ये दोनों intersect करते हैं points A और B के ऊपर. उनकी आपने length find करनी है उन दोनों के दरमियान. ठीक है, so you can find the coordinates of A and B and find the distance between them. So how do you find the coordinates of A and B? You solve these two equations simultaneously. X square plus y square equals 20 है और दूसरा आपके पास आ रहा है y equals 2x plus 5. So what you do is you put that into this, put y equals 2x plus 5 into this, and that's going to give you something, x square plus 2x plus 5 whole square equals 20. हम इसको simultaneously solve कर रहे हैं. That gives us x square plus 4x square plus 20x plus 25 minus 20 equals 0. And that is 5x square plus 20x plus 5 equals 0, which is x square plus 4x plus 1 equals 0. Now, can you factorize this? We can't. इस पे quadratic formula apply कर दें. Quadratic formula के अलावा कुछ कर सकते हैं यहाँ पे? Quadratic formula के अलावा can we make it a square somehow? No. Let's apply the quadratic formula. Quadratic formula apply करते हैं. क्या होगा? अब क्योंकि आपको exact form चाहिए यहाँ पे, इसकी working दिखाना जरूरी होएगा. आप एक कैलकुलेटर से नहीं कर सकते डायरेक्टली. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में वैल्यूज इनपुट करने के बाद भी आपने वर्किंग शो करनी है. ठीक है, सो -4 plus minus square root of 4 squared minus 4 into 1 into 1 divided by 2 into 1. What does that give us? That gives us -4 plus minus square root के अंदर हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 16 minus 4, that is 12 divided by 2. अच्छा, अब 12 स्क्वायर रूट अगर आप कैलकुलेटर पे डालो, आपके पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी आ जाती है 2 square root of 3. So basically आप कर क्या सकते हो, अंदर 12 को आप लिख सकते हो as 2 square into 3, right? And then 2 can come outside, so it becomes -4 plus minus 2 square root of 3 over 2.
Now you can take 2 common from the numerator. जब 2 common ले लेंगे तो आपके पास अंदर क्या बच जाएगा, -2 plus square root of 3 plus minus square root of 3 whole divided by 2, and you end up with -2 plus minus square root of 3. These are the values of x that you get. ठीक है, ये 2 values x की आ गई. अब इनके corresponding आपको y की values figure out करनी है. ठीक है, so you got x equals -2 plus square root of 3, and you've got x equals -2 minus square root of 3. What about the corresponding values for y? इसके अंदर input कर दे linear equation के अंदर. That's going to be better, simpler. Y equals 2x plus 5 था, so y equals 2 into -2 plus square root of 3 plus 5, or y equals 2 into -2 minus square root of 3 plus 5. Simplify these. 2 into -2, that's -4. -2 square root of 3 plus 5, that gives you 1 minus 2 square root of 3. And this one gives us -4 plus 2 square root of 3 plus 5. And that is 1 plus 2 square root of 3. ये आपके पास दूसरे y के coordinates आ गए. तो अब a और b क्या है हमारे पास? a और b, yeah, so we don't know which one is a, which one is b, but we can say one of them is a, the other is b. a आप कह लो इसको, this is -2 plus square root of 3 and 1 plus 2 square root of 3, and the other point is -2 minus square root of 3 and 1 minus 2 square root of 3. These are the 2 points that we were looking for. ठीक है, ये points आ गए. अब इनमें distance find करना है. ठीक है, distance find करेंगे, किस तरह से distance formula apply कर दें. So we can say AB equals square root of x2 minus x1 का whole square. You have to be careful with the signs here. इसके बहुत ज़्यादा careless errors होते हैं. -2 minus square root of 3 minus -2 plus square root of 3. इसका square, right? So this is my x1. This is x2, this is y1, this is y2. अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है? x2 minus x1 का whole square. ठीक है, x2 minus x1 का whole square. Similarly, I can do y2 minus y1 whole square. y2 is 1 minus 2 square root of 3 whole square. Sorry, 1 minus 2 square root of 3 minus y1, which is 1 plus 2 square root of 3. And then whole square of this, right? x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, and then square root of that. Let's simplify this. What does this give us? -2 minus square root of 3 plus 2 minus square root of 3 whole squared plus 1 minus 2 square root of 3 minus 1 minus 2 square root of 3 whole squared. Now 2 and -2 get cancelled. ये हमारे पास आ गया -2 square root of 3 in the first bracket, square of that. In the second bracket, 1 minus 1 cancel हो गए, and I have -4 square root of 3. Please do check the working. Let me know if there's something wrong. -4 square root of 3 whole square. Now if I square them, I end up getting 4 into 3, that's 12, and then 16 times 3, that is 48. And we get square root of 60 from that. That's the value of, that's the distance between A and B. ये आपको find करना था. ठीक है? So we found the length and then the distance, making sure that we're using exact values and not the decimal values. ठीक है? That's the distance AB. Let's move on. Now it says a straight line through the point 10, 0 with gradient M is a tangent to the circle. Find 2 possible values of M. Okay, now there are many different ways you could think about it. You could draw a figure, उससे कर सकते थे, और algebraically इसको इस तरह भी सोच सकते हैं कि आप कहें ये straight line है, आपको point पता है, gradient पता है. Can you write down the equation of that line? Y equals 10, 0. That's going to be the x-intercept. अच्छा, इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं. Y minus y1 equals m into x minus x1. Equation क्या हो जाएगी? It's going to be y minus 0 equals m into x minus
10. That's your equation, which is y equals mx minus 10m. ये equation आ गई. This is a tangent to the circle. Circle क्या है? X square plus y square equals 20. That's the equation of the circle. दोनों equations आ गई हैं आपके पास. अब क्योंकि the line is a tangent to the circle, इसको अगर आप simultaneously solve करोगे तो आपके पास जो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगी उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 होना चाहिए. ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए बिकॉज द लाइन इट्स अ टेंजेंट टू द सर्किल, राइट? लाइन इज अ टेंजेंट टू द सर्किल. दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें. कैसे करेंगे? y इक्वल्स दिस, ये उसमें इनपुट कर दें जाके. दैट्स गोइंग टू गिव यू x स्क्वायर प्लस mx प्लस mx minus 10m whole square equals 20. Simplify this. That's x square plus m square x square minus 20 m square x plus 100 m square equals 20. Simplify this. You get x square plus m square x square minus 20 m square x plus 100 m square minus 20 equals 0. Let me just check the working again. mx minus 10 था वहाँ पे. Then we just expand that. That gives us m square x minus 20 m square x. That's fine. Plus 100 m square. Yeah, that looks okay. And then minus 20. So इससे हमारे पास क्या आ जाता है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट देख लें क्या बन गया. 1 plus m स्क्वायर. यहाँ से फर्स्ट टू टर्म से 1 plus x स्क्वायर कॉमन ले लिया. We get 1 plus x square there, 1 plus m square there. x का कोएफिशिएंट क्या है? minus 20 m square. Constant क्या है? Constant is 100 m square minus 20. Now since the line is a tangent to the circle, what that means is इस इक्वेशन का हमारे पास जो x की वैल्यूज है वो कितनी होनी चाहिए? एक वैल्यू होनी चाहिए. ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए. So let's do that. We say discriminant b square minus 4ac, that should be equal to 0. Now what's the discriminant? Minus 20 m square the whole square. Just give me a minute. यहाँ पे हम लिख देते हैं ऊपर के a b और c से हम क्या रिप्रेजेंट करें? a is 1 plus m square, b is minus 20 m square, c is 100 m square minus 20. Okay, these are the values of a, b, and c that we're inputting into this. B square minus 4 into a is 1 plus m square into c, that is 100 m square minus 20. That should equal 0. इसको simplify कर लें. You get 400 m raised to power 4 minus 4 into 100 m square minus 20 plus 100 m raised to power 4 minus 20 m squared equals 0. Simplify everything. You get 400 m raised to power 4 minus 400 m square plus 80 minus 400 m raised to power 4 and plus 80 m square equals 0. Now 400 m raised to power 4 will cancel. Okay. What are we left with? We are left with the minus 320 m square plus 80 equals 0. And that gives us m square equals 80 over 320. Which is 1 over 4. And now we take square root of this. Square root जब भी लेते हैं, we put plus minus. So we've got m equals plus minus 1 over 2. These are the two values of m that we have here. Okay. ये आपका second part था. Quite tricky in terms of the algebraic steps that we have. इसमें errors के chances काफी हो सकते थे. Plus minus के, but that's what you could do here. इसका एक और तरीका भी हो सकता था. अगर आप इसकी डायग्राम बना लेना,
it might have been much simpler than this, लेकिन उसके लिए फिर आपको डायग्राम बनानी पड़ती प्रॉपर, उससे आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज करके आप कर सकते थे, ठीक है। सो यू कैन ट्राई दैट योरसेल्फ, वो आपसे हो सकता है। ओके, सो दैट्स इट ऑन दिस पेपर। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा आसान है, वो आप देख लेंगे। या सो दैट्स इट on these two papers. That's November 2021 paper 1-3 and November 2021 paper 1-2। ठीक है, इसके हमने ये कुछ selected questions देख लिए।